of his death, it shocked all of us, because he has been a very close part of the union, and we have been seeing that he has been part of all the struggles, all the demands that the contractual workers have raised. If you look at the general situation, I mean, why did he die? I mean, prima facie it is being said that it is a suicide, although the post-mortem report has not been received yet. We have talked to the IO, and he says that it is taking some time. He was working as a contractual worker, and he was receiving a meager amount of some 15,000 rupees per month as his wage, whereas it is his legal right to get regularized, because according to the law of the land, according to Contractual Labour Abolition and Regulation Act, which is the law of the land, works and the Industrial Dispute Act, work such as sanitation worker cannot be maintained for a long time through contractualization, and our union is fighting a case demanding regularization. Very unfortunately, the day Vijay Kumar died, that is the same day that we got to know, the union got to know, that our demand of getting the central government minimum wages for the workers, that got implemented. So it is through hard struggle, it is through mobilizing, it is through gathering at the administration building, gathering at the dean of students, ignoring and facing the threatenings given by JNU administration at the contractor, that why were you protesting, even if you do not get your salary you should not protest, etc. So facing that kind of backlash from the administration, the contractual workers have been fighting for each and every small rights of their own, and it is so hard to get them, although they achieve their demands, but it is after several rounds of mobilization, several rounds of denying administrative threat. So we are very particular about one thing, that JNU has done injustice to Vijay Kumar by denying him a permanent job, his rightful demand, which is his legal right to get regularized, that was denied. JNU has denied to give him and other contractual workers wages at par with law, and I think JNU must acknowledge that it has a role to play. The contractors must acknowledge that they have a role to play to the hardship that Vijay Kumar was going through. हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से लगातार वर्कर्स की स्थिति तो ख़राब है, और इसी बीच में ये होता है कि यहाँ पे एक वर्कर हैं विजय वाल्मीकि, उनकी लाश मिलती है पेड़ से लटकी हुई कैंपस के अंदर आज से 10 दिन पहले। और जिस तरह का कंडीशन है, वर्कर्स का कंडीशन है इस कैंपस में कि लेट तनख्वाह आना, उसके साथ साथ ठेका पे रखना और कभी भी निकाल देना, और यही हुआ। अभी हमें मूल कारणों का नहीं पता है, लेकिन उसके साथ साथ हम इस डिमांड के साथ आज डीन ऑफ स्टूडेंट पे गए थे कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, और उसके साथ साथ एक दूसरी डिमांड ये थी कि जो एक नई टेंडर आई है, चाहे वो सैनिटेशन में हो, चाहे वो मेस वर्कर्स में हो, कि 55 साल के ऊपर का रिटायरमेंट कर रहे हैं, 55 साल के ऊपर के लोगों को निकाल रहे हैं। तो हमने यही पूछा है उनसे कि किस आधार पर, किस लेबर कानून के आधार पर उन्होंने ऐसा किया है। 1 महीना पहले हम लोग तकरीबन इसी सवाल पर हम गए थे, जब सैनिटेशन वर्कर्स का हो रहा था, तो उसमें 5 वर्कर्स को निकाला गया था, तो उन्होंने उस समय 5 वर्कर्स को रख लिया था। तो आज भी हमारी यही मांग है कि जितने वर्कर्स को निकाला गया उनको रखा जाए, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मांग थी हमारी, विजय वाल्मीकि के परिवार को नौकरी दिया जाए, पक्की नौकरी दिया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे परव्यू में नहीं आता है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि हम आपके इस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होती है तो हम इस पे एक बड़ा मोबिलाइजेशन करेंगे।
मेरा नाम ईशांत कुमार है और मैं सन 2009 से दिल्ली जल बोर्ड में सीवर स्टोर पे काम कर रहा हूँ, सीवर का काम कर रहा हूँ। और हमें जो है अभी बीते साल जो 2023 के अंदर में दिसंबर के महीने में हमें नौकरी से हटा दिया गया है। हमें जब मर्जी हटा दिया जाए, जब मर्जी नौकरी पे रख लिया जाता है। 580 लोगों की जो है सेक्शन लिख ली, ठेकेदारी की सेक्शन लिखी, और अब तक हमें ड्यूटी पे नहीं रखा गया है। और जो हमारी बकाया जो पिछला जो वेतन है 2 महीने का, वो भी नहीं हमें मिला है। हम पूरी तरह बेरोज़गार हो चुके हैं, हमारी भूखों मरने की हालत हो चुकी है। There is an order from the Labour Office of the Labour Commissioner way back in 2018, which says that JNU should provide equal pay for equal work, meaning that the contractual workers should be paid at par with the permanent workers. And if he was if you take the case of Vijay Kumar, if he was receiving 15,000 per month, he should have got something around, I mean definitely around 50,000 rupees per month. So just think about it. For last 6 years, for each and every contractual workers of JNU, which is around 1,500, JNU administration has been stealing money. The contractor employed by JNU administration has been refusing to give, both of them has been refusing to implement the equal pay for equal work verdict. The same reproduction of caste structure, meaning the next generation of sanitation workers are also forced to become contractual sanitation workers. It's a systematic discrimination, it's a systematic casteism that is being practiced.